I'm presenting my screen. Let me know once you see it. Okay, so now today's topic is EWM. So outbound delivery in EWM. Okay, हमने inbound delivery देखा. That inbound delivery का flow क्या रहता है normally? Hello. Purchase order inbound delivery, then enter inbound delivery, then put away. Which one? Enter inbound delivery. Inbound delivery, after we are doing maintain inbound delivery, create warehouse task, then that is put away. Okay. Or else we can say like not maintain. So purchase order. So in ERP side, purchase order, then ERP inbound delivery, right? PL31N, and then in EWM inbound delivery. Okay. And then again that inbound delivery only we need to change like okay in EWM is inbound in EWM inbound delivery. Okay, like this we have to say, and then put away. Outbound में is little bit different. So it's again start with sales order. Okay. Yes, sales order, then outbound delivery. This is an ERP system, right? Then okay, request, just ignore this one. So it is for embedded decentralized actually. So in EWM, it directly create outbound delivery order. Okay, sales order, outbound delivery, then outbound delivery order. Okay, then again that outbound delivery order, right? We'll do picking, packing, right? And then once we complete it, it will create outbound delivery. And then this outbound delivery, right, in EWM will update the outbound delivery of ERP system for good issue. Okay. Okay, sir. Clear हो गया flow? Okay, okay. Only difference यहाँ पे compared to inbound में inbound delivery, then again inbound delivery and put away, that's it, right? But यहाँ पे outbound delivery in ERP, then outbound delivery order, right? And then so अभी order क्यों है? This is also we called it as a warehouse request. Okay, so request है कि yes we need to picking and packing and this thing, right? तो जब picking packing किया जाता है वो किया जाता है for this again this one outbound delivery order. Okay, and then once we are okay, then we'll जब हम गुड इशू करेंगे सिस्टम विल क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी EWM एंड ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये अपडेट करेगा ये वाले को आउटबाउंड डिलीवरी, क्योंकि जैसे हमने देखा था इनबाउंड में राइट गुड्स इन हो रहा था, तो सेम वे हियर आल्सो इट शुड ट्रिगर, राइट? Then now if you check, so transaction is very simple, SEWM PRDO, just remove I and then O. Here you can see outbound delivery order and then outbound delivery, right? Now to create order, the sales order, the transaction is VA01, right? Happen. Okay, then the order type, so ये actually ERP का sorry SD लोग create करते हैं, we don't need to do anything, right? Order type and this thing just like a purchase order, right? वैसा ही है. So these are just standard setting कि इसका sales और क्या है, distribution channel क्या है, division क्या है, right?
7. What I will do, I show slash CWM slash monitor server 7500 SAP full stock. Added a material number. Okay. So our material is mat1 and mat2. Right. I will just copy this one. We'll just close this one. Recording chalu hai, right? Yeah. Okay. Then here we have to enter the sales order. Sorry, customer. Right. So we can go with Tata 01. We already many create kiya hai, right? And then material mat1 and mat2. Okay. Quantity 1 piece simply. The reference number, if you can anything put test. Payment term 0001, you can go for it. Okay. Mat 2 rupees. Oh, sorry. ये number है अपना 647 and 46. Let's change it. Okay, 1 quantity. Then scroll little bit amount. We can just go ahead with 1, right? Enter. Then double click on material. So हमें इसका लोकेशन वगैरह डालना है, ये मटेरियल कहाँ पे, go to the shipping. And basically इसमें जब ऑर्डर क्रिएट करता है ये सब फेच हो जाता है, राइट? बट अभी एसडी वाले कोई है नहीं, सो विल डू इट मैन्युअली, राइट? द लोकेशन क्या है, अभी मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, नॉट डी, एस पे, राइट? डी वी यूज फॉर परचेस ऑर्डर, सो यस. And then shipping point in our case is also same, right? Okay, we need to maintain for second material also. See item number 10. Okay, just click over here for item number 20. For 20 के लिए भी हमें ये maintain करना है. So I'm going to show you the simplest way also, right? I know it's a little bit difficult to remember all these things, but ये एक standard है, so it's good to know कि कैसे create किया जाता है project में, फिर आपको सब मालूम है कि कहाँ पे देखना है, right? Then we need to check कि कुछ और तो pending नहीं है, right? So for that what you can do, go here, right? And then sorry, edit में जाके incompletion log, right? So जो अगर incomplete system यहाँ पे दिखा देगा, then what we have to do, select all and complete data. जो वो बोल रहा है वो डायरेक्टली हमें मेंटेन करना है, राइट? जो कुछ सिस्टम में अवेलेबल है. सेंटर, सो लोकेशन, इनको टर्म्स, okay, go for F4. Okay, it's nothing. Test. Okay, then next, net weight, can go for anything, 5 and this thing. Okay, you can see document is complete, right? So we can save it, or else you can click over here, document, sales document, and deliver, right? इससे क्या होगा, it will open a new transaction directly, which is VL01N. Okay, I will give you then document flow in chat, VL01, then VL01N, and then EWM, that is slash SEWM slash PRDO. Okay, ये एक flow है. Then that is another flow which we are going to use on regular basis, NO, then slash SEWM slash PRDO. Okay, it's taking some time. बड़ा slow है.
ओके, यू कैन सी ऑर्डर क्रिएट हो गया एंड देन स्क्रीन आउटबाउंड डिलीवरी हो गया, राइट। यहाँ पे हमें क्या देखना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड देन जस्ट चेक द लोकेशन। सो लोकेशन अगर होगा तभी हम डिलीवरी क्रिएट कर पाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। इफ यू रिमेंबर जो हमारा फर्स्ट टी कोड था, राइट, डिलीवरी कैसे क्रिएट होती है, राइट, और हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका आंसर यहाँ पे है। ओके, so you just need to check and then what we'll do, we'll save it. So again configuration agar sab kuch barabar hai, system will save and then it will distribute the delivery. Okay, you can see saved and distributed. Now okay, I will copy this number. So we have only one delivery, so we can also go and check directly in PRDO, right, but you can also search and then all other configuration jo humne document type check kiya tha, right, is same. Now you can see I'm not able to find any delivery number. Even if I remove it, okay, then the warehouse number is wrong. Let me change the warehouse. Okay, even though if I select, no any delivery, right? Let me check in SMQ2. So it's stuck in queue because of shipping point location. क्या error है? Shipping point location is not required for the field. Click over here, right? Shipping point, shipping office, right? Anyone remember कि ये चीज क्या है? सर हमने वो सबसे पहले मेंटेन करना रह गया था। आपने बोला था कि ये एरर आएगा आपको आउटबाउंड डिलीवरी के टाइम, तो हमने शिपिंग पॉइंट और शिपिंग ऑफिस और इनबाउंड डिलीवरी के लिए कुछ तो भी मेंटेन किया था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ओके, और कहाँ पे करना है ये मेंटेन? पॉइंट मतलब जहाँ से इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में किया था ना सर, ड्यूरिंग असाइनमेंट डेफिनेशन enterprise structure. पॉइंट Sure is the define enterprise shipping structure. So shipping yes, point में आपका ये तो बराबर है. So it's supply chain unit, right? ओके Go to the main, मतलब log पे इसमें SAP menu में master data, right? Maintain supply chain unit, right? So our supply chain unit 7500 and then 1008. You go to the change mode. यहाँ पे SO नहीं है, right? Shipping office नहीं है. That's why system not allow for outbound, right? So we'll go with shipping office, save it. Now if you go back to the queue, right, try to execute again. So okay, ये resolve हो गया. Okay, now we'll check. Right, quantity again is look like almost same, right? Document type you can check. I want you to check later कि ये कैसे क्या क्या document type है, and I want answer from everyone. Okay, WhatsApp group में कि assignment कैसे जो हमने inbound में देखी थी, right? यहाँ पे आप देखिए PDO, OUTBA and item level. It's DLV and ODLV. Okay. Now अभी ये material ये order आया है, right? EWM में. Now we'll do picking. You can see the status. Outbound में, sorry, inbound में अलग था, right? Put away, good received, and then put away. यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? Picking. Okay. Then packing, loading, and then good issue. Okay. So picking. कैसे करना है? Select this. Again same warehouse task. Okay. Now strategy हमने maintain की नहीं है, right? अभी तक. So अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, so it will give me an error. Okay. So what we'll do now, we'll create manual task जैसे हमने outbound में किया था. Okay. Sorry, inbound में starting में किया था. So सबसे पहले मुझे बताइए कौन सा बीन मुझे लेना पड़ेगा, GR वाला या PL10 वाला, PL20 whatever, कौन सा बीन लेना चाहिए यहाँ पे? GR वाला नहीं सर ले सकते ना, पिकिंग के लिए जहाँ पे
GR वाला है वही लेंगे, वहां से पिक होगा ना मतलब। वो फिर GR अगर प्रोसेस होके किसी और बिन में जा रहा है तो उस बिन से GR में रॉ मटेरियल रहेगा ना, अगर उसमें वर्क सेंटर पे कुछ काम हुआ और फाइनल हुआ है तब जाएगा, है ना। नो, GR हम क्यों लेंगे? क्योंकि GR में तो वो कौन सा मटेरियल है जो स्टेजिंग में पड़ा हुआ है? हाँ सर पीएल वाला वही है। लेंगे, PL वाला क्योंकि लेना उसमें है, राइट? मटेरियल क्योंकि परचेसेस लोकेशन, ये स्टॉक टाइप भी देखिए F1 लोकेशन। है, हमने S डाला है, राइट? F2 चाहिए फिर। ओके, प्रैक्टिस चालू हो गई है लगता है। ओके, सो विल गो विद दिस bin, एनी bin वी कैन टेक। ओके, we need to check material. So ये कौन सा मटेरियल है? 476 is this one. Okay, okay. So इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टिल ये मुझे एरर दे रहा है, पैक ओपीटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये बीन कहाँ से ले रहा है? कहाँ से मतलब, नहीं क्वेश्चन मतलब जो हमने स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर बनाया है हम्म, और वो फिर हम असाइन करते हैं ना नहीं WPT नहीं, में, हाँ अभी हमने तो ये WPT में, राइट? तो ये WPT अभी वहाँ जब हम पे आते हैं। आउटबाउंड करेंगे, यू कैन सी WPT 2010 इज डिफरेंट, राइट? हम अब तक 1010 6040, सॉरी कौन सा था, 4060 वो चेक कर रहे थे, राइट? गो टू द SPRO, क्रॉस प्रोसेस सेटिंग, task, right? Cross process type, then sorry, 7500 right? Stock removal, ये यहाँ से वो ले रहा है, which is wrong, right? Should not be packing, it should be staging, right? Means GI वाला, तो GI तो पहले बात तो है ही नहीं, right? Means we need to create that storage type, right? So we'll go and then create. What we can do, we can simply copy GR, just change the name to GI00, right? Because all the setting are same, right? Save it. Then we'll create one bin /TWM /LS01 GI zone. Okay, GI00. Save it. Now go back to WPT. Okay, 10500 2100. Now again, why we are going to maintain in destination? GR में तो वो सोर्स में हम मेंटेन कर रहे थे, राइट? यहाँ पे हम डेस्टिनेशन में क्यों मेंटेन कर रहे हैं? You check 1010, यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन में सोर्स में मेंटेन किया है, राइट? बट हमने 2010 को डेस्टिनेशन में मेंटेन किया है। क्योंकि तो पिक तो वहां से करेगा ना, पिकिंग प्रोसेस है ना, लिस्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे रहेगा ना मटेरियल, जो अभी जहाँ पे है वेयर हाउस में, वहां से सीधा फिर कस्टमर को यस, और एल्स वी कैन से कि टूटा हुए करते वक्त डेस्टिनेशन में हम मटेरियल रखेंगे तो ये सोर्स होगा, जब अनलोडिंग होगा यहाँ पे सोर्स होगा, राइट? बट जब हम पिकिंग करेंगे, राइट, पिकिंग में डेस्टिनेशन सोर्स क्या होगा? जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है जिस बीन में, राइट, वो होगा आपका सोर्स। और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जाके रखना है, क्योंकि हम मटेरियल डिस्पैच करने वाले हैं, राइट? हेलो,
Yes sir, yes. सचिन क्लियर है? सचिन ड्रॉप हो गए. सचिन लेफ्ट हो गया सर. Yeah, just अशोक और संतोष. Santosh sir just joined. संतोष, okay, okay, right. So opposite है प्रोसेस. तो उसके वजह से जो हम सोर्स में कर रहे हैं, अभी सोर्स कब लगेगा? जब हमें आगे प्रोसेस मूव ऑन कर रहे हैं, पुट अवे करना है, राइट. बट अभी हम सोर्स क्या होगा? जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, रैक, पैलेट, वॉट एवर, वहां से हम यहाँ पे लेके जाएंगे, राइट. सो आई विल जस्ट सेव इट. यू कैन सी category is also 2 and activity is pick. Okay, now to check, now I will just go back. See the pin. Okay, task create हो गया. And again for the second one, now mat1 का हमें material देखना है, bin देखना है. So it's this one. You simply just copy, and then for mat1 also we'll save it. Okay, task create हो गया. We are okay with the task. Create plus save, right? ये task create हो गया अभी, right? Picking, someone need to go and pick the material. When the picking is done, right, then again they can confirm the task, right? Then we'll confirm, save, and confirm plus save. Okay, now go back. Now so अभी देखिए इसका पिकिंग हो गया, राइट. इफ यू गो इन आउटबाउंड डिलीवरी अभी तक क्रिएट नहीं हुए, मतलब ये फिक्स नहीं कि ये डिस्पैच होगा, राइट. ऐसे कभी कभी हो जाता है कि विल पिक एंड देन लेटर विल डिस्पैच. ये इज वेरी लाइक कैन से द कॉमन सिनेरियो, राइट. नाउ right, so we can create outbound delivery, right, and then we can good issue. But if you click directly over here good issue, that's हमने खाली picking किया और good issue कर दिया, right. So now if you check for this one, the outbound delivery is created. Okay, इसका डॉक्यूमेंट नंबर देखिए अलग है, राइट. और ये डॉक्यूमेंट, ये जो आउटबाउंड डिलीवरी है, राइट, it will, this document will update your ERP delivery. Now if you go to the VL03 and check the document flow, if there is no any error, it will complete. Now it's an error, so must be some issue. So let's check क्या है क्यू में, SMQ2 में जाके. Yeah, some queue is there. Oops, what is this? Okay. System slow था शायद से. Let's see now. Yeah, is updated. Okay, but status is in process because of invoice. Invoice अभी तक create नहीं है, so end-to-end flow invoice. So VF01 is the transaction to create invoice, is not our task, right? For that is again depend कि कैसे invoice create हो जाता है. अभी now in India is like GST invoice, right? So online GST invoice create हो जाता है. There are some tools, but yeah, I just want to show you the end-to-end process. So ऐसे वो invoice create करेंगे, press enter, it will check the finance entry. राइट, वो मटेरियल मास्टर में जो कुछ मेंटेन किया है, देन फाइनेंस का जो कुछ सेटअप है, जस्ट प्रेस एंटर. Okay, and then once you save, it will create invoice. या इसमें कुछ एरर आता है, you can just check for once, right? पर ये अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो देन छोड़ दीजिए, don't waste your time because it's all together finance. यहाँ पे हमारा कुछ रोल है ही नहीं. Okay, now if you check status,
You can see, okay, invoice is open, is fine, but status अभी completed है, right? It's a simple flow, right? हमने मटेरियल पिक किया और डिस्पैच कर दिया, right? और ये अपडेट कब होगा? जब हम गुड इशू करेंगे तभी ये अपडेट होगा, राइट? नाउ मैंने मैसेज में और एक फ्लो डाला है VL01N, राइट? सो ऐसा नहीं है कि हमें VA मतलब ऑर्डर ही क्रिएट करना है VA01, राइट? वी कैन डायरेक्ट क्रिएट अ डिलीवरी विच इज कॉल्ड विदाउट रेफरेंस. सो इफ यू गो टू द ट्रांजैक्शन इवन VL01N, राइट, यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर क्रिएट किया तो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन सी ओवर हियर विदाउट ऑर्डर रेफरेंस. तो क्लिक ओवर हियर एंड देन इन दैट केस द डिलीवरी टाइप इज LO. तो आपको दोनों का देखना है, LF और LO का, दोनों का आपको असाइनमेंट देखना है स्टैंडर्ड, राइट? और मुझे वो भेजना है कि कैसे उसका असाइनमेंट हुआ है, जैसे हमने इनबाउंड का देखा था, राइट? सो ये कब यूज किया जाता है? कभी किसी कस्टमर को लेट से सैंपल प्रोडक्ट देना है, राइट? तो उस केस में ये मेथड यूज किया जाता है. एंड we can use this method because again we don't care कि ऑर्डर कौन सा है, because हमें खाली डिस्पैच करना है, ओके? मटेरियल हमें EWM के अंदर देखना है कि कैसे प्रोसेस हम करते हैं. वी डोंट, हमको ये मतलब नहीं कि ऑर्डर कैसे बना है, ओके? प्रेस एंटर. यहाँ पे अगेन सेम इंफॉर्मेशन, कस्टमर, प्लान GI डेट, जस्ट गो विथ सम फ्यूचर डेट, एनीथिंग लाइक फेप, राइट? देन मटेरियल, $46 and $47, okay? Quantity again one piece will go, okay? Now it is mandatory to maintain the location and plant, right? If you don't maintain, what will happen? I will show you. So it just created, right? ये EWM में गया ही नहीं है. If you check in change mode, see we can change it, right? Why? Because दोनों maintain नहीं किया, and then that the reason system is not able to determine the warehouse. दोनों maintain करना mandatory. If you just maintain, for example, plant, when if you save it, still it will not work. See, it's only save. तो हमें लोकेशन भी मेंटेन करना है, ओके? सेव इट, ओके? तभी जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ हम एक चीज करेंगे और एक, गो टू द आउटबाउंड डिलीवरी ऑर्डर. ऑलवेज चेक कि आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, आउटबाउंड डिलीवरी ऑर्डर है या आउटबाउंड डिलीवरी है. ओके, अगेन आई विल पिक द मटेरियल. नाउ वी नीड टू चेक द बीन बिकॉज अभी स्टॉक नॉट श्योर कहाँ पे है. सो कम ओवर हियर, रिफ्रेश, क्योंकि स्टॉक कम हो चुका है, राइट? तो ये DC में पड़ा है, टू, और ये भी यहाँ पे है. सो व्हाट विल डू, हमारे पास दूसरा स्टॉक भी है, GR में भी बहुत कुछ है. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट लेटर. सो आई विल गो विथ दिस LS10. ओके, अगेन डिफॉल्ट वैल्यू. ओके, कंफर्म, हिट प्लस सेव, राइट? मैं अभी टास्क मैंने क्रिएट किया है, राइट? मैं कंफर्म करता हूँ, ओके? एंड देन कंफर्म हो गया, गो बैक, यू कैन सी द स्टेटस. बट मैंने क्या बताया, जब आप गुड इशू करोगे तभी अपडेट होगा, राइट? अगर मैं चेक करता हूँ अभी डिलीवरी, L03N, सी देयर इज नो एनी कंफर्मेशन, ओके? बिकॉज आप, हमने अभी तक गुड इशू किया नहीं है. वो जब गुड इशू होगा तभी जाके वो अपडेट होगा ना. और एक सिंपल सिनेरियो, अगर ये मुझे पैक करना है, राइट? लास्ट केस में हमने डायरेक्ट गुड इशू करके उसको डिस्पैच कर दिया था, गुड इशू कर दिया था. बट अब अभी पैक करना है, राइट? मैनुअल पैकिंग भी हम कर सकते हैं. गो हियर, राइट, यू कैन सी पैक ऑप्शन. इट इज कॉल्ड मैनुअल पैकिंग, राइट? नेसेसरी नहीं है,
इफ नॉट देन ये विल डायरेक्टली गुड इशू, बट पीओसी से हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी हमें पैकेजिंग मटेरियल डालना है। सो वी नीड टू सर्च हमारा पैकेजिंग मटेरियल का डिस्क्रिप्शन 7500 CB and pallet. So we'll go with box, for example, 2 box, right? And then we are going to pack in GI zone. Okay, execute. So 2 pack box create हो गए, and then again you can drag and drop like this. Okay. Okay, so it's giving me some error. No process exists. Process type exit. No repacking possible. Right. So if you remember, सबसे initial में हमने देखा था. If you go back, okay, master data default value करके एक चीज थी, right? Go to the warehouse number, right? If you check 0001, so यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, right? So is there any on the warehouse? Yeah, so let's check for our warehouse. So 7500. So एक default, क्योंकि मैंने जो बताया, right? If you want to do anything, right? So WPT is mandatory, right? So you can see repack WPT, right? So here we'll maintain repack WPT, which is 3040, right? Save it. If you want to execute manual packing, okay, now go back and then check. Okay, it still not work, then go back again. We need to refresh the transaction. Now if you check again, हमें वो box create करने पड़ेंगे. क्या है? Zone. We will check ये हमारी है, yes 75. Now we can do repacking. See हो गया अभी, right? ये इसमें हो गया और ये मटेरियल मैं इसको drag and यहाँ पे drop करता हूँ. Okay, and then save it. Okay, now if you go back, you check HU, आपको HU दिखेगा. And then again if you select and then you know जैसे हमने देखा था last time, इसमें क्या पैक है हम वो देख सकते हैं. Okay, and then again you can trigger good issue one by one, or if you click over here it will complete a header. You can see the status now, picking, packaging, and now as soon as when you complete the good issue also, right, ये भी हो गया, and then same information will update here also. It's a little bit slow today, or as usual normally जैसे slow होता है. See, it show information and is come in process, but yeah, it's completed. Clear? मतलब हमने अभी पैकिंग किया ना सर, पैकिंग करके गुड्स इशू किया ना, Yes, yes. पहले नहीं किया था. ओके सर. Exactly. Manual packing किया. Okay. Clear? यस सर. Now जो हमने अभी किया, right? स्पेशली जो बीन का जो हमने किया, राइट, बीन हमने मैन्युअली मेंटेन किया. आई विल अगेन क्रिएट वन न्यू डिलीवरी अगेन विथ NO विदाउट रेफरेंस. एक ही ऑर्डर आप क्रिएट करना विथ रेफरेंस एंड देन रिमेनिंग के जस्ट क्रिएट विदाउट रेफरेंस. जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज ऑर्डर में कुछ एरर भी आ सकते हैं. सो जो मैंने अभी किया, राइट, वो तो मैं हर टाइम नहीं कर सकता, राइट. मैन्युअली बीन तो मैं डाल नहीं सकता एवरी टाइम, राइट. हर टाइम में तो जाके स्टॉक चेक करूँगा नहीं, राइट, वन बाय वन, राइट, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग. और मतलब प्रैक्टिस करते वक्त तो कर सकते हैं, बट रियल टाइम में तो नहीं कर सकते, राइट. सो अगेन वी हैव स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटजी. जैसे पुट अवे स्ट्रेटजी थी वैसे स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटजी. अगेन कंसेप्ट इज सेम. इफ यू
Go to the food issue process. Okay, strategy. Okay, again रूल. सो वहां पे कुछ रूल रहते हैं, राइट. कंपनी में जब मटेरियल डिस्पैच किया जाता है तो कुछ स्पेसिफिक रूल रहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. जो मटेरियल फर्स्ट आया वही फर्स्ट जाएगा, और जो लास्ट अभी रिसेंटली आया वो फर्स्ट जाएगा. लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया जाता है, राइट. जैसे आपने इसमें देखा होगा डी मार्ट में, राइट. ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो पहले आए वही पहले जाते हैं, राइट, लाइक दैट. सो 7.5, so we can see, so FIFO and LIFO is already created. अभी सिस्टम को कैसे पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होना चाहिए, राइट. इफ यू सिलेक्ट दिस एंड इफ यू चेक दिस रूल, राइट. सो यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट. यहाँ पे सॉरी, टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वन which only capture date, sorry, which only capture the date, and second time also. अभी एक मटेरियल है वो सुबह भी आया शाम भी आया है, राइट. और कंपनी को स्पेसिफिक चाहिए जो सुबह आया वही पहले जाना चाहिए. इन दैट केस विल सिलेक्ट दिस वन. ओके, वी डेट Q. ओके, एंड देन फॉर LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट के केस में अगर आप देखोगे उन्होंने कैसे मेंटेन किया है, सो ओनली इज अगेन सेम, बट यहाँ पे टिक है डिसेंडिंग ऑर्डर, वो अपोजिट में चलेगा. क्लियर? यस सर. नाउ जैसे हमने स्टोरेज टाइप मेंटेन किए थे, राइट, पुटावी के वक्त, तो यहाँ पर भी हमें सर्च सीक्वेंस मेंटेन करना है. अगर आपने इनबाउंड किया है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट दिस वन ऑल. save it. A new entry, so 7500, so FIFO, और एक मैं मेंटेन करता हूँ LIFO के लिए. ओके, देन सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पर मैं सीक्वेंस डालता हूँ स्टोरेज टाइप का. मीन्स फर्स्ट इट नीड टू चेक, लेट्स से इन पैलेट 10, then palette 20 for example, then rack 10 and then rack 20. ये उसने सीक्वेंस चेक करना चाहिए, राइट. पहले पैलेट में देखेगा, देन पैलेट 20 में देखेगा रैक, एंड देन लाइक दिस. ओके, विल सेव इट. नाउ सेम वी नीड टू मेंटेन फॉर LIFO also. Again we'll go with random or like opposite, palette 10 and then palette 20. Okay, save it. मतलब जो LIFO देखेगा ना वो सबसे पहले रैक में देखेगा, रैक, फिर यहाँ पे अगर मटेरियल नहीं है फिर वो रैक 10 में देखेगा, फिर पैलेट में देखेगा, लाइक दिस, राइट. अभी इसका डिटर्मिनेशन जो है ये भी WPT के ऊपर ही काम करता है, बट अभी FIFO और LIFO अलग अलग है, राइट. और WPT डिटर्मिनेशन एक ही है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद द इंडिकेटर, जैसे हमने इनबाउंड में देखा था. ओके, तो यहाँ पे वी कैन सिंपली क्रिएट 2 इंडिकेटर. is already there, so we'll just delete new entry 7500, again FIFO, FIFO, and then FO LIFO. Okay, save it. FIFO and LIFO. Okay, now determination, right. जो हमने सर्च सीक्वेंस देखा था, राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ सर्च सीक्वेंस. सो गो हियर अगेन, सेम कॉन्फ़िग है, थोड़े से चेंजेस है खाली, इनबाउंड की जगह पे आउटबाउंड है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट delete now, save it. Okay, new entry, so 7500, right. अभी removal indicator, right. So whenever is FIFO with WPT 2010, right, यहाँ पे हमें search sequence maintain करना है, that it should go FIFO and then the stock removal rule जो हमने maintain किया अभी, right, वो, right. Combination 1, combination 2, if it's LIFO indicator with WPT 2010 means हम एक ही WPT के कर दो अलग अलग ट्रिगर कर सकते हैं. तो sequence should be LIFO and also the rule should be LIFO, right.
Again, like put away, we have maintained 2 combination. So we have to give the what? Access strategy. मतलब उसको हमें sequence देना पड़ेगा, right? So 750. So see, it should give the priority with both removal indicator and ProWPT, right? We'll save it. Now we'll go to the mat 1 to maintain. Okay, so 6. We go here. क्योंकि WPT में प्रॉब्लम क्या है, एक ही इंडिकेटर, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ इनबाउंड आउटबाउंड का अलग है नहीं, राइट? अगर मैं इनबाउंड का करूंगा तो आउटबाउंड कैसे डिटर्मिनेशन होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडिकेटर के साथ हम कर सकते हैं, राइट? जैसे हमने इनबाउंड में देखा था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं. सो मैट 1 के लिए व्हाट विल डू, विल मेंटेन FIFO. ओके, सेव इट. देन मैट 2 के लिए व्हाट विल डू, विल मेंटेन LIFO. Okay, save it. Now if you go back here, and if I directly select and click on create, तो देखिए ये जा रहा है palette 20 पे, right? So material is 647. We'll check 647. We'll just refresh one. Okay, मैं यहाँ पे filter डाल देता हूँ 647. Okay, and then यहाँ पर भी मैं stock type डाल देता हूँ, or else we'll go with simply available stock. Again 647. Stock type we are looking for F2. Right, and the GR date ये कौन सा है, मैट 2 है, मतलब ये लीफो में जाएगा, राइट? तो इसका देखिए इसमें है ही नहीं, रैक में मटेरियल ही नहीं है. और अगर मैं इसको डेट को ट्रैक करता हूँ, ओके, तो उसने कौन सा बीन लिया है, कैन चेक 200101. ओके, 200101, राइट? और उसमें भी फिर 3 है, उसने कौन सा लिया है, HU59. ओके, लास्ट वाला. वाई? बिकॉज उसका टाइम देखिए. ओके, ये अभी लेटेस्ट आया है, राइट? क्लियर यहाँ तक? सर हमने ये FIFO के लिए मेंटेन किया था ना? नो नो नो, मैट 2 है ना, लिफो है. ओके ओके, LIFO है, इसलिए वो मटेरियल के लिए जो मटेरियल लास्ट आएगा. आया है वो मटेरियल पहले मेंटेन हो. यस. अभी ओके यहाँ पे एक इशू देखिए, ये क्या कर रहा है, पैलेट, बट हमारे पास इसमें भी मटेरियल है, राइट? LS10 में, या बट उसका डेट मैच नहीं कर रहा है, राइट? या दिस वन, अगर ये मटेरियल रैक में होता तो हमने जो सीक्वेंस मेंटेन किया, सिस्टम ऑलवेज गो विद द सीक्वेंस, मींस कौन सा वाला, स्टोरेज टाइप वाला, पैलेट, रैक, PL10, PL20, वही सीक्वेंस में जाके वो चेक करेगा, राइट? नाउ इफ यू चेक फॉर अदर मटेरियल, मैट 1 जिसमें हमने FIFO मेंटेन किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो कहाँ से लेते हैं, हम देखते हैं मटेरियल, राइट? वो ले रहा है रैक 0101, रैक 10 0101. So what I will do, I will just remove this one, 48. It's 40. Oh, 46 है एक्चुअली. इसका स्टॉक है नहीं, मैं बाद में स्टॉक इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, F2. ओके, तो ये रैक में ये मटेरियल, राइट? और 21 में तो वो 21 में जा रहा है, राइट? 21 से ले रहा है. Even though we have maintained LS10, so still, you know, it will take rack as per the sequence.
Okay, it will take as per the sequence only. Okay, FIFO क्लियर है यहाँ तक? इजी? हेलो, ये रैक 1 में सर फीफो के थ्रू हुआ ना, मैट 1 का है ना ये? यस मैट 1 नहीं है, मैट 1 इसके से वो ये वाला बीन दे रहा है। सेम ही वो जो सेम ही इसमें अलग अलग मटेरियल है, सॉरी सेम ही रैक में स्टोरेज में मटेरियल है, बट अलग अलग डेट के साथ है। सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करेगा। यस, वो क्या करेगा, रैक वो पहले जाके रैक में देखेगा। अगर रैक में मटेरियल नहीं है, मतलब जो फीफो जो डेट लगाएगा ना, वो रैक के हिसाब से लगाएगा, स्टोरेज टाइप के हिसाब से लगेगा, राइट। इट विल नॉट चेक एट अ वेयरहाउस लेवल, इट विल चेक एट द स्टोरेज टाइप लेवल। मतलब वो पहले आरके में जाकर जाएगा, वहां पे देखेगा कौन सा है, राइट। व्हाट मतलब मुझे क्या बोलना है यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ इसमें इशू क्या है ये वाले फीफो और लिफो में। ओके, फॉर एग्जांपल ये दो स्टोरेज टाइप है अलग अलग, ओके, ये और ये, और सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल है और ये भी सेम मटेरियल है। तो हमने सीक्वेंस क्या मेंटेन किया, लेट्स से ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट जब फीफो है, जो कुछ उसने हमने जो रूल मेंटेन किया है, फीफो है लिफो वॉट एवर, राइट, तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि कौन सा ओल्ड मटेरियल है। अगर इवन दो मटेरियल जो एक्चुअली आया हो सबसे पहले ये वाला आया है और बाद में यहाँ पे आया, बट वो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर देखेगा। ओके, ओके, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि हमने सीक्वेंस क्या रखा है, ये वाला ये वाला रैक रखा है। एंड देन रैक 20, क्योंकि उसको बताया गया है कि यहाँ पे देखना जो सीक्वेंस जो फीफो है ना, वो स्टोरेज टाइप के हिसाब से देखना, नॉट कि सबका देखना। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ ये एक्चुअली रॉन्ग मैसेज प्रोसेस है, राइट, क्योंकि जो फीफो और लिफो किया जाता है, राइट, ये स्टोरेज टाइप पे मेंटेन नहीं किया जाता, वो वेयरहाउस लेवल पे मेंटेन किया जाएगा, राइट। कि अगर ये मटेरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सिस्टम ने सबका स्टोरेज मतलब सब देखना चाहिए, राइट। सब जितने भी स्टोरेज टाइप है वो देख के उसने डिटरमाइन करना चाहिए बिन, राइट। यस सर। तो उस केस में व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट विच इज कॉल्ड स्टैग्नेंट फीफो, राइट। स्टैग्नेंट फीफो हम हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। इट्स अगेन वेरी सिंपल। तो ये स्ट्रेटजी हम रहने देते हैं, इस विल नॉट डिलीट दिस वन। फॉर स्टैग्नेंट फीफो गो टू द मास्टर डेटा, ओके, हियर यू कैन सी डिफाइन स्टोरेज टाइप ग्रुप, हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। न्यू एंट्री, सो फॉर एग्जांपल 7500 FIFO, राइट, FIFO, ओके। रूल यहाँ पे हमें वो अगेन मेंटेन करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट वो, और हम पुट अवे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। एंटर, सेव इट। नाउ इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अगेन स्टोरेज टाइप डिफाइन असाइन करने, जितने भी हमारे स्टोरेज टाइप है, ओके। न्यू एंट्री, देन 7500, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस का नाम है ही नहीं, राइट। पहले 10 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा 1 2 सीक्वेंस कुछ है नहीं, राइट। पहले 20, या अगर मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, LS10, ओके, रैक 10, बट या यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा तभी जाके वो काम करेगा। अगर यहाँ पे वो स्टोरेज टाइप ही नहीं है देन ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क। LS हो गया, रैक हो गया, पैलेट 20 हो गया, व्हाट एल्स, HU10, लिफो को देन अपोजिट, ओके। पैलेट 10, पैलेट 20, रैक रह गया, रैक 20,
Okay, save it. Clear? मैंने पहले ग्रुप क्रिएट किया, उस ग्रुप को मैंने स्टोरेज टाइप असाइन कर दिया सभी. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, अभी वो स्ट्रेटजी डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए. सो आई विल गो टू द गुड इश्यू प्रोसेस. ओके, जो ऑप्टिमाइज जो है उसको मैं अनटिक कर देता हूँ. हमने देखा है राइट, अगर हम वो अनटिक करते या डिलीट करते, then system will not able to trigger strategy, right? मतलब मैंने एक टाइप स्ट्रैटेजी निकाल दी है. राइट, नाउ आई विल गो अगेन, नॉट सेव इट. Select. Okay, it's not able to determine the bean. Okay, because strategy नहीं है. Okay, दोनों केस में सोर्स बिन उसको नहीं मिल रहा है बिकॉज नॉट एबल टू डिटरमाइन दी बिन. ओके, नाउ ये डिलीट हो गया. राइट, go to the WPT. Seven 2010 stock removal. Okay, to create the group, so go to the good issue process, strategy, this type search sequence, termination group, so 7500. CG, for example, we just give the name. Seven 10, for example. Sorry. कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ. So I'm missing something. Yeah. उसको this is often different one. That's एक एंट्री है. डेफिनेशन ग्रुप तो ये तो अलग है.
ये वाला तो नहीं है. Oh, yes. To go to the strategy 7.0. Okay. Not search. हाँ, एक असाइनमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है. टाइप यहाँ पे तो नहीं करते असाइन. डिटर्मिनेशन. ओके, नॉट एबल टू रिकॉल. कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं? ओके, लेट मी चेक. याद नहीं आ रहा है. असाइनमेंट एक रह रही है. should work actually. टिक बिक तो कुछ है नहीं ऐसे. Assignment, then creation. बराबर है, इसमें भी कुछ है नहीं. Nothing to do with this one. कहाँ पे है? So ऐसे तो कुछ assignment. Okay, let me check this one. Will update you. Yeah, we'll check. Okay. Hello. Okay, sir. Okay, then we'll stop here. Next topic में ये मैं clear करता हूँ, and then we'll start with a new process which is POSC in outbound. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Good night. Okay, sir. Bye. Good night.